Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So today is the first class regarding your laboratory lab, digital electronics lab. So in digital electronics lab, you have to do all the things which you have to study in your syllabus. So सर साउंड बहुत लो आ रहा है. okay, sound low. Okay. Is it right now? Is it right now? Yes, sir. Okay. So only 15 students have joined. Please tell all the students to join as soon as possible. Okay. So today just we are going to see some basic things about digital electronics lab and what you have to do regarding the lab. So whichever lab is being completed in this mode, you have to make your own copy and after all the labs completed, this means individually जैसे जैसे lab complete होता जाएगा day wise, you have to send me your copy of the completed lab before the next lab. Okay, so जैसा कि आज lab हो रहा है, next week में आज के दिन फिर से lab होगा, तो next lab के पहले आप लोगों को previous lab का जो manual है बनाकर वो भेजना होगा. ठीक है, इन Google Classroom में आप लोग भेज सकते हो. तो या फिर लैब के लिए ऐसा होता है, मैं दूसरा गूगल क्लासरूम, तो जहाँ पर आपको सबमिट करना है मैं ये आपको फिर से बता दूंगा. बट जो भी लैब कंप्लीट होता है यू हैव टू सबमिट द मैनुअल फॉर दैट. ओके, लैब असाइनमेंट, जो कि लैब असाइनमेंट कहा जाएगा. ठीक है, बिकॉज देयर इज सम मार्क्स ऑन योर दैट लैब मैनुअल आल्सो. क्या फॉर्मेट होगा, दैट फॉर्मेट आई विल सेंड इट टू यू. Okay, so let us start because it's already 6 minutes has gone. Okay, so today what we will see is just the verification of the gates. Okay, so gates may be the basic gates or the universal gates. Okay. So let me share the whiteboard. So are you able to see the whiteboard? Today I am going to use Microsoft Whiteboard. Okay. So is it visible? Yes, sir. Okay. Okay. Okay.
So in DLE lab, the very first lab, okay, so जो भी हम lab perform करेंगे, that all those lab will be on will be done on the virtual platform. Okay, so virtual platform, आप लोगों ने पहले कोई भी lab किया है virtual platform पर? I think किया होगा. Yes, anybody? Virtual platform पर आपने lab किया है और कोई? ECE के स्टूडेंट्स लोगों ने तो जरूर किया होगा. ECE क्या CSE के स्टूडेंट्स ने भी किया होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में. भी किया है सर, फिजिक्स में किया है सर first फिजिक्स semester। में किए हैं सर। ओके ओके, सो फिजिक्स में भी किया होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में किया होगा. ओके, so we will do the lab on virtual platform. Okay, let me show you the virtual, firstly the virtual platform on which we will do all the labs. Okay. Let's do it. Yes. So are you able to see the virtual platform or the virtual lab desktop page? Yes, anybody? Please reply. यस सर। Okay, so you can see here that electronics and communication engineering, digital electronics, IITR. Okay, so IIT Roorkee का design किया हुआ है ये. So these are the list of the labs which whatever is shown here. Okay, so you can see, yes, you can see here that we have to go through the verification and interpretation of truth table for AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, and XOR gates. Next is the construction of half adder and full adder using XOR and NAND gates and verification of its operation. So shall verify half adder and full adder, half and full subtractor. Okay, so relation of logic functions with the help of universal gates. Okay, construction of NOR gate latch and verification of its operation. Verification of truth table of SR, JK, TD flip-flop using NAND and NOR gates. Design and verify the 4-bit serial in parallel of shift registers. Implementation of and verification of decoder or demultiplexer and encoder using logic gates. And next is the implementation of 4:1 multiplexer and 1:4 demultiplexer using logic gates. Design and verify 4-bit synchronous and asynchronous counter using JK flip-flop. Verify binary to gray and gray to binary conversion using NAND gates only, and verification of truth table of 1-bit and 2-bit comparator using logic gates. So this is the list of experiments which we have to go through in digital electronics lab, because these are the experiments which are available over here already. So if you were available in college or if there was physical mode lab in physical mode, in that case you will have the breadboard and all the components. You have to assemble all those components and get the output. If you will do all the things in the physical mode, then you will have to do that. But for this situation, we have to satisfy ourselves by only this much. Okay, so firstly, I want to know from your side that are you all aware of the truth table of all the gates? Yes.
I want to tell you all that the attendance is mandatory for all the classes. So because there is marks which are associated with the attendance also. So I request all the students to participate in all the classes, because that is the marks which you will get free of cost. Instead, in each and every class you will get some new thing, some portion which you have to go through. Okay, so in the first lab we have to do the verification of truth table of logic gates. Okay, so we have to go through this one first, but before verification, I want to know from you all that whether you are acquainted or with the truth table of all the gates or not. Okay, so one by one we'll go through. So firstly, I'm taking the AND gate. So are you all aware with the AND gate, that the very basic symbol for this gate is this? If there is a two input gate with output Y, so the Boolean expression for the AND gate is what? Y is equal to Y output is equal to A and B. And I think all of you know that the AND operation is denoted by a dot between two variables or within the expression. Okay, so we have this one. Next we have the OR gate. Okay, so for OR gate, I think all of you know the symbol again, with two input OR gate by output. So here in this case, the output Y is represented with A or B. Okay. So and operation के लिए we already know that what is the operation and. So as we are going through all the algebraic expressions with the algebraic operation with the binary number only. So if we are going through the AND operation, then the AND of 0 and 0 is nothing but a 0. Okay, so one by one we will see. So here is the AND gate, OR gate. Third one is the NOT gate. So this NOT gate, what it will do, it just complement the input. Okay, so Y output, so if it is a Y output, so Y is nothing but is equal to A bar. If input is A, then the output will be A bar. Okay, so next we will have the XOR. Next we will have XOR. So the very basic symbol of XOR is nothing but two input XOR with two inputs A and B and Y as the output. Then Y is nothing but A B bar plus A bar B. I think all of you know this. Next one is the XNOR. XNOR is nothing but okay. So Y is here
AB plus A bar B bar. Sorry. So now what we have is F part NAND. And I think all of you know that NAND is a universal gate with two input. If we will take two input and get NAND gate, then we have the output as Y is equal to A and B. So with the complement of A and B, and next one is the NOR, which is also an universal gate, A and B as the output, and Y, so Y is nothing but A plus B bar. Okay, so these are the gates which we have to go through. Instead, maybe in the virtual platform, all the gates are not given. So you can verify all these gates in laboratory if you are available physically in your college. Okay. So okay, so let us go through the truth table. Okay, so instead of writing here the truth tables, before that I'm showing you. So how many of you are have seen the breadboard? Yes. How many of you have seen the breadboard? Nobody? No, sir. Okay, Rohan. So आपने physically ये breadboard देखा है? Yes, sir. Okay. So I just want to show you the picture of breadboard, and because whatever the components we have to use it on the breadboard only, because it is the platform where we can use the prototype of the circuits without any soldering. Okay, so let me show you. So are you able to see the picture of breadboard? Are you able to see the picture of breadboard on the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So yes, you can see here that a number of pictures are here, and what you can see from these pictures. Yes, so you can see in this picture. So here you can see. Okay, let me take the pen so that. ओके सो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हो इस पिक्चर में, विद इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो दैट देयर आर सम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो एक ब्लू कलर्ड लाइन है और यहाँ एक रेड कलर्ड लाइन है, यहाँ पर भी एक रेड कलर्ड लाइन है और एक ब्लू कलर्ड लाइन है. सो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जो ये ड्रॉन है, सेगमेंट जो ड्रॉ किया गया है, दिस सेगमेंट इज जस्ट शोइंग दैट all these pins or all these portions are shorted with each other, है ना. यहाँ पर बहुत सारे pins हैं. Pins means यहाँ पर there are some holes which are shorted with each other, and here the vertical lines, and all these pins are also shorted. So let me show you the internal
picture of this breadboard. Okay, so are you able to see this picture? Yes, sir. Yes. So you can see here that here it is a breadboard. So I have drawn this page from the website only. Okay, so let me show you the picture. So yes, history. So history was this, that there is a board और उस बोर्ड से कुछ मेटल स्ट्रिंग्स बाहर निकले हैं और वहां पर वायर्स कनेक्टेड है. ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव, सो यस ऑब्वियसली हमारे हम जब ब्रेड बोर्ड की बात करते हैं तो वी विल हैव अ ब्रेड ऑन द बोर्ड लाइक दैट. So yes, previously you can see here in this picture. So are you able to see this picture? Are you able to see this picture? That on a wooden platform there is some components has been attached with some wires, है ना. आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ कनेक्ट किए गए हैं. एक डायोड, एक एलईडी लगा है, इसके अलावा बैटरी है, देयर इज अ स्विच एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड on a wooden platform. ओके, सो इन सभी चीज़ों से यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर इसमें काफ़ी मेहनत है क्योंकि यहाँ पर कुछ पिंस लगाए गए हैं, इसके अंदर कील लगाना पड़ा है. ओके, सो इन सभी से छुटकारा मिल जाता है हमें कब, जब हम ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो लेट मी शो यू दैट. Yes, why use breadboards? You can see here that it is an electronic breadboard, actually referring as shoulderless breadboard. Okay, it is a shoulderless breadboard जहाँ पर कि हमें कोई शोल्डरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. हम जस्ट प्लग एंड पिन, ओके, प्लग एंड प्ले मीन्स हम उसे उस कंपोनेंट्स को उसमें जस्ट इम्पिंच करते हैं और उसे यूज कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन impinge the ICs. Okay, we can impinge ICs, the resistors, the capacitors, transistors. Okay, so we can use multiple type of components within the breadboard and do our job. Yes, you can see here that a circuit built on a shoulderless breadboard. Okay, so you can see here that there are number of components, and ICs also, an LED is there, a capacitor is there, an oscillator is there. Okay, so multiple types of things, a switch is there. So on a single platform you can impinge different components and do your job. Okay, so now terminal strips, as you can see here that there is a red mini breadboard. तो इस जो ब्रेडबोर्ड है आप यहाँ पर देख पा रहे हो दैट ये जो फर्स्ट वन वाला पिक्चर है, इट इज द फ्रंट टॉप और ओके, सो ये फ्रंट व्यू है इसका. ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रंट व्यू है और ये बैक का व्यू है. सो यहाँ पर बैक के व्यू में आप देख पा रहे हो दैट एक मेटल स्ट्रिप लगा है और ये मेटल स्ट्रिप एक कंटिन्यूअस मेटल स्ट्रिप है. तो ये जो यहाँ पर पिंस लगेंगे, यहाँ पर ये जो पिंस यहाँ पर लगेंगे एट दिस पॉइंट्स, दीज आर नथिंग बट शॉर्टेड विद ईच अदर. क्यों? क्योंकि एक मेटल स्ट्रिप है जो कि कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं कि वो कहीं से ब्रेक है. सो ऑल दीज पिंस आर व्हाट, all these pins are shorted with each other. Okay, यहाँ पर कोई यहाँ पर ओपन है. ओके, दिस पोर्शन इज ओपन, ये ओपन पोर्शन होता है और ये आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं. ओके, लेट मी शो यू दैट आल्सो. यस, आप जो मेटल स्ट्रिप जो यहाँ पर देख रहे हो, इस पोर्शन में जो आप मेटल स्ट्रिप देख रहे हो, ये मेटल स्ट्रिप कुछ इस ढंग का है जहाँ पर ये जो टॉप पोर्शन है, ये जो टॉप पोर्शन है, ये टॉप पोर्शन हमें यहाँ पर दिखता है. ओके, ये टॉप पोर्शन हमें यहाँ पर दिखता है जहाँ पर हम पिंस को इम्पिंज करते हैं. जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं
उन कंपोनेंट्स के पिंस को हम यहाँ लगाते हैं and they will get connected with each other. So whatever pin we will impinge here or here, they will get sorted क्योंकि ये एक single continuous metal strip है ना? So yes, so that is what I want to show you in terms of breadboard. Now, instead of going through this virtual platform, virtual platform for your experiments, here one more thing I want to share with you is nothing but Tinkercad. So how many of you, anybody know about Tinkercad? Are you able to see this? Tinkercad create 3D digital design with online CAD. Yes, sir. Okay, so with Tinkercad, okay, I am going to open it. I am just clicking on it. So this is a very good platform to connect the Sir. to connect your components. Okay, so here, so you can just make your account here. Okay, you just have to log in. You can log in with your Google account also. Okay, as I have done already. I have made an account on this platform. You can also do your make your account here. So here different types of things are available here: code blocks, lessons, circuits, 3D designs. So we can go through the circuit. So whatever you want to do, you just get one click. You have to do a one click over here. If you want to design any circuit, then create new circuit. You can see here, there is a button of create new circuit. You can go through this. Okay, it is going through. Just wait for a few seconds. Okay, so यहाँ पर आप देख पा रहे हो microbit. Okay, so this is one new thing which is introduced over here. A microbit component is shown here also. Okay, so what you can do, you can see here on the right portion of the page. यहाँ पर आप देख पा रहे हो multiple types of components यहाँ पर available हैं. और अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर सर्च का बटन भी है. आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो आपको जो कंपोनेंट चाहिए. ठीक है, यहाँ पर कंपोनेंट्स का जो एक लिस्ट है, जैसे यहाँ पर बेसिक कंपोनेंट्स हैं. इन बेसिक कंपोनेंट्स के अलावा बेसिक, आर्डिनो, माइक्रोबिट, सर्किट असेंबलीज, ऑल. So let us click on all button. So you can see here that you will have a plenty of components are available over here. So let us go through the basic components. Okay, so resistor, LED, push button, potentiometer, capacitor, slide switch, 9-volt battery, coin cell, 3-volt battery, जो कि घड़ी में इस टाइप की जो सेल्स होते हैं वो घड़ी में लगते हैं. 1 वोल्ट रिस्ट वॉच में, 1.5 वोल्ट बैटरी, ब्रेडबोर्ड स्मॉल. ओके, सो ब्रेडबोर्ड अवेलेबल है, माइक्रोबिट, आर्डिनो यूनो R3, vibration motor, DC motor, okay, servo motor. So multiple types of components are available over here. So you can, if you so first thing what you have to do is to design your circuit, whatever you want to design on your copy, then come over this platform and get your components. So whatever component you want to take from this list, just click on that. The device will be here. Okay, so yes, you can see wherever I am taking my cursor, are you able to see or visualize this picture that मैं जहाँ पर कर्सर ले जा रहा हूँ, आपको दिख पा रहा होगा कि वो पर्टिकुलर लाइन वहाँ
एक लाइन ड्रॉ हो जा रहा है, वो लाइन ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑल दीज लाइंस आर शॉर्टेड। ओके, ऑल दीज लाइंस आर शॉर्टेड। आप इस पिक्चर को बड़ा कर सकते हो, मैं इसे बड़ा करता हूँ, आपको दिखेगा क्लियरली। ओके, सो यस, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल वेरी क्लियरली दैट Yes, sir. किसी भी पिन पर मैं जहां अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, उस पिन से रिलेटेड जो भी वर्टिकल लाइन है वहां पर वो सारे लाइन हाईलाइट हो जा रहे हैं। वो हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपस में शॉर्टेड है। ठीक है, जैसे यहाँ मैं अपना कर्सर लेके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्लस वाली लाइन पे, रेड लाइन पर, ऑल दीज लाइन्स आर शॉर्टेड। ठीक है, तो आपको जो भी पैरेलल कनेक्शन करना हो आप यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ पर आप सीरीज कनेक्शन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पूरे के पूरे शॉर्टेड है। ठीक है ना। ओके, सो in this way you can, if you know how to connect the things in on a breadboard, then you will have this very used to user friendly platform where you will have a plenty of components available over here. You can get, okay, so let me take one example, that if you want to glow an LED, then you will have to take an LED here. Okay, so LED का जो जो भी जो दो पोर्शंस होंगे, ओके, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, जब मैं इस LED को यहाँ पर लाया तो यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स ओपन हुआ जहाँ पर नेम और किस कलर का LED आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। देयर आर 6 ऑप्शंस आर अवेलेबल ओवर हियर। सो if I am taking a yellow LED, then it will glow it as a yellow. So LED में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एनोड होगा, कैथोड होगा। मैं यहाँ पर कर्सर ले जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं दैट हियर एनोड और कैथोड ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहा है। इफ यू वांट टू टेक अ रजिस्टर, टेक इट ओवर हियर एंड जस्ट पिन इट ओवर हियर। सो अब आप यहाँ पर इसे रोटेट कर सकते हो। रोटेट कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 इस रजिस्टर का जो है एक वर्टिकल लाइन में अटैच हुआ है, मतलब ये जो शॉर्टेड है, मतलब इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। सो हम इसे क्या कर सकते हैं, कहीं और लगा सकते हैं, सो दैट वी विल हैव some other components are also getting attached with it. Okay, so इस तरह से आप डिफरेंट कंपोनेंट्स लेकर आप बैटरी ले सकते हैं 9 वोल्ट का, या जो भी आपके यूज का हो, और आप यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जस्ट एक इंट्रोड्यूस करना चाहता था आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ, सो दैट यू कैन डू, अगर आप इंटरेस्टेड हो सर्किट डिजाइनिंग के लिए, तो आप आसानी से यहाँ पर सर्किट को सिमुलेट करके देख सकते हो वेदर द सर्किट इज वर्किंग और नॉट। ओके, okay, now let us come to the virtual platform where we have to perform the labs. So the first one is the verification of the truth table for AND or NOT, NAND, NOR, XOR and XNOR gates. Okay, so yes, this is the introduction. Welcome to the electronics lab. So what we will do here, we will learn and understand the basic concepts of digital electronics. We have the list of experiments. Okay, I am just clicking it over here. So verification and interpretation of truth table for AND or NOT, NAND, NOR, XOR and XNOR gates. Okay, so all these gates are basically constructed or made with the transistors or transistors, diodes, resistors. Okay, so मैंने जो यहाँ पर पहले आप लोगों को दिखाया जस्ट एक सिंबल था, है ना, बट ऑल दीज components or gates are made up of what? The transistors. Okay, transistors, diodes, like that. So to verify and interpret the logic and truth table for OR gate using diode resistor logic, NOT gate using transistor, and NAND, NOR, XOR and XNOR gates using transistor, register, transistor logic. So okay, so we have to go through these RTL, DRL also in the logic family module, which is the last or second last module. Okay,
in simulator 1 and verify the truth table for AND or NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR or gates in simulator 2. So here two types of simulators are available here. Okay, so this is the aim. Now all of you have to go through the theoretical part. Okay, I am just opening it, the theoretical part. Okay, so we have to go through all these gates, and the AND gate is an electronic circuit. Okay, AND gate सभी लोग जानते हैं, y is equal to a dot b, where y is the output. So in this case, I think all of you know that for the input and for the inputs for the 0 0, we have always the output as 0. For 0 and 1, we have the output as 1. For 1 0, sorry, output as 0. For 1 0 also we have a 0, and for 1 1 we have a 1. So what is the characteristic of this AND gate? So what is the characteristic of this AND gate? दोनों ट्रू होना चाहिए इनपुट. Yes, means दोनों ही input high होना चाहिए, high, तभी in that case we will have a output. If any one of the input is low, कोई भी एक input अगर low होता है तो output क्या मिलेगा? We have a no output. Okay, so ये AND gate की property है, which I think all of you know. Okay, so AND gate is an electronic circuit that gives a high output one only if all its inputs are high, and a dot is used to show the AND operation. That is A dot B, or can be written as AB. Okay, A और B के बीच में कुछ नहीं है, means there is a dot. Okay, so let us move to the circuit representation. Okay, so a simple to input logic AND gate यहाँ पर show किया गया है, जो कि एक RTL register transistor logic है, where the register and transistors are used. Okay, connected as shown in the figure. So output हम क्या जानते हैं कि output high तभी हो जब क्या हो, दोनों का दोनों input. So A and B are the inputs and Q is the output. Okay, sorry, so AND gate through RTL logic. So यहाँ पर we have a VCC which is taken as 5 volt, because we are going through a very sensitive devices. So we have a 5 volt is applied here. Basically हम जब किट में भी experiments को perform करते हैं, in that case we will